Good evening and welcome to the India Law Forum and LITFest 82nd SKOCH Summit. On December 16th, 2012, the cries of Jyothi Singh drowned India as a nation. Jyothi, a 23-year-old physiotherapy student who was traveling home with a male friend, was brutally assaulted on a moving private bus by 6 men and thrown to the side of the road. She succumbed to her injuries 13 days later in an overseas hospital, which included beating with an iron bar and severe internal injuries from being assaulted while unconscious. 5 of the perpetrators were adults, 4 received death sentences, and the 5th reportedly hung himself in his prison cell. The 6th perpetrator could not be named publicly as he was not yet of the age of 18. Nirbhaya, Priyadarshini Mattu, Jessica Lal, Naina Sani, Vidya Jain. What do these names have in common? These are cases that shook the moral conscience of the nation. Even years after they have been tried, these names are cemented in people's memories on account of their brutality, the trials that followed, and the landmark judgments they resulted in. Trials of Truth addresses these hard-hitting criminal cases and delves deep into the aspects of retribution, reformation, and deterrence that the criminal justice system seeks to deliver. It is an important anchor and reflection of the evolution of our collective moral conscience over the years, from the dual prisms of the courts of justice and the courts of public opinion. This book seeks to develop the discourse on criminal justice in India. On the panel this evening, Professor Satyapal Singh Baghel, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India. Professor Satyapal Singh Baghel, member of the Lok Sabha from the Agra constituency, is currently the Minister of State in the Ministry of Law and Justice. This is his 4th term in the Lok Sabha. Previously, he has been a member of the 12th, 13th, and 14th Lok Sabhas. Professor Baghel has also served as Cabinet Minister in the Department of Animal Husbandry, Fisheries, Minor Irrigation, and Underground Water in the Government of Uttar Pradesh. The Honorable Minister has several literary and artistic accomplishments to his credit and writes poetry. He also has a deep appreciation for Indian classical and folk music and literature. Professor Saab is a highly qualified and distinguished educationist who holds an MSc in military science, an MA in history, an LLB, a PhD, and Professor Baghel has previously taught defense studies as an associate professor at Agra College. Ms. Pinky Anand, the author, former Additional Solicitor General and Senior Advocate, Supreme Court of India. Ms. Pinky Anand is a renowned expert in the field of constitutional law and has fought numerous cases which have led to landmark judgments. Some of the leading cases fought by her are related to the constitutional right of freedom and expression for the Indian actress Khushbu, in which the Supreme Court upheld the rights in a path-breaking judgment and quashed 21 cases of defamation. The legal battle for BJP leader Arjun Munda to be made Chief Minister of Jharkhand was fought by Ms. Anand. The delimitation case in the Supreme Court leading to the implementation of the Delimitation Commission's orders in the country on the basis of the 2001 census saw Ms. Pinky Anand at the helm. A graduate of Harvard Law School, an ILF scholar, and an honorary professor, she is the 2nd woman in India to have been awarded the High Constitutional Law Office of ASG. Ms. Anand lectures in universities in India and abroad and in various national and international conferences. Ms. Gauri Gobardhan, co-author, is associate at P&A Law Offices. Gauri Gobardhan has completed her LLM from Georgetown University Law Center and holds an LLB in intellectual property law from Amity University. Previously, she's worked as an associate in Associates. Delighted to have Mrs. Rekha Sharma, Chairman of the National Commission for Women with us. Mrs. Rekha Sharma assumed the charge for Chairperson of the National Commission for Women on August 7th, 2018. She has been a member of the Commission since August 2015. Prior to joining the Commission, Srimati Sharma was actively associated with civil society organizations in various capacities. She has worked extensively on issues impacting women's lives. Before joining the Commission, she was a member of the District Consumer and Redressal Forum in the Government of Haryana. Srimati Sharma has also been instrumental in establishing a registered NGO called Haryana Mahila Utthan Samiti, which works for the empowerment of rural women in the state. Mr. Mahesh Jethmalani, lawyer and member of parliament in the Rajya Sabha, is a senior advocate and a sitting Rajya Sabha MP. He's had an illustrious career
spanning 40 years at the bar and has appeared in several cases of national importance, including the trial and appeals of the former Chief Minister of Maharashtra, the A.R. Antulay case, and appeals before the High Court and Supreme Court of the two accused in the assassination of Prime Minister Indira Gandhi, as well as the trial of Harshad Mehta. Ms. Millie Aishwarya of eBury Publishing and Penguin Random House, India. Her focus has been on championing the best voices in fiction and non-fiction while publishing a range of bestsellers across segments. Her published authors include Prime Minister Narendra Modi, Piyush Pandey, Hussain Zaidi, Yuvraj Singh, Hindol Sen Gupta, R. Gopalakrishnan, Karan Johar, and Ravi Subramaniam, to name a few. It is pertinent that this discussion is being moderated by none other than renowned cinema personality, Ms. Gul Panag, who is not only a distinguished cinema personality with an accomplished career, but is also a social activist. Ms. Panag runs a foundation in her grandfather's name, the Colonel Shamsher Singh Foundation, that works on various social issues such as promoting citizen-government partnerships towards gender equality, addiction awareness, education, employment, and disaster management. She is a frontline advocate who regularly engages and facilitates dialogue and debate on critical issues of gender equality and justice, environmental issues, fundamental rights, secularism, and political accountability. Ms. Panag holds a bachelor's in mathematics, economics, a master's in political science, as well as an LLB. We're delighted to have our distinguished panel with us this evening. May I now please invite Shri Samir Kochar, Chairman Scotch Group, to declare the discussion. Namaskar. The description itself is so riveting and gut-wrenching that I really don't want to stand between you and the panel discussion. So I would just like to welcome you all. I think you are some of the busiest people in India, and I'm grateful that you're honoring us with your kind presence in this Scotch Summit and the first India Law Forum. I'm particularly thankful to the Honorable Minister, Shri Satyapal Singh Baghel. Baghel ji, जो आप अपने जिलों में हैं और वहाँ से रिमोटली हमसे कार से हमसे आप बात कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. I would like to leave the discussion to Gul Panag. Thank you, Gul. Thank you, Mr. Kochar. Good evening, ladies and gentlemen, my esteemed panelists, and those of you who joined us remotely from their devices. I'm indeed privileged to be here moderating this conversation, and particularly so on the subject of the interface of law and society and law and humanity. It is an utmost privilege as a law student to have the opportunity to speak with someone of the eminence of Mrs. Pinky Anand, and of course, our Law Minister, Minister of State, Mr. Baghel. Also on the panel, there is Gauri, who is an accomplished lawyer herself, Mrs. Sharma, and of course, Millie Aishwarya. Thank you so much for giving me this opportunity. I'd like to thank the Scotch Group. I'd like to thank the India Law Forum for making me part of this. I'd like to start this discussion by firstly congratulating the author. Ma'am, this book is absolutely outstanding. And I say this not as a layperson, but as somebody who's on the intersection of perhaps being a layperson and somewhat somebody who spent 3 years getting my LLB. मुझे लगता है कि अगर ऐसी किताबें और छपी तो जो सामाजिक स्तर पे कानून की एक पहचान है, कानून की एक छवि है, उसमें बहुत बदलाव आ सकता है. और इसके लिए मैं मिली ऐश्वर्या को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस किताब को पब्लिश किया. ऐसी किताबें वो सामने लेकर आ रही हैं, पर सबसे ज्यादा मुबारकबाद की जो पात्र है वो है हमारी ऑथर मैडम पिंकी आनंद और उनकी बेटी गौरी. एक बात सबसे पहले ये बताइए, ये बहुत क्लीशेड सवाल है, लेकिन ये आपके जहन में इस किताब को लिखने का जो आइडिया आया वो कैसे आया, कि किस तरीके से नियमों को, कानून को एक आम आदमी या आम औरत तक पहुंचाया जाए, एक ऐसे तरीके में जो स्पष्ट भी हो और सरल भी. आपने अपने ऑथर्स नोट में कहा है कि शोभा दे ने आपको प्रेरित किया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? You're right, Gul. Actually, firstly, you refused to acknowledge yourself as a lawyer. Really speaking, it was quite something else.
as a lawyer, we only talk law, breathe law, write law, think law, and communicate in all sorts of technicalities and cliches as to what should be the outcome of a case. So by the way, I am very active with a lot of social groups as much as with the Jaipur LITFest, which I participate in for the last 7-8 years. And I go there every year, and I normally am either a panelist there or a speaker, or I enjoy in any case chit-chatting with everybody around. And on one of the occasions when we were standing, and Shobha and I are very friendly, and Shobha said, "Why don't you write a book?" So I said, "Yes, I've written 2-3 books, which I had. I've written books on law, and they've been published by Thomson Reuters and others." So I said, "Yes, I've written." She said, "No, I am not talking about a legal book. I'm talking about a book for laymen." And so that's actually why standing there, and I'm a little impetuous. So I have this horrible habit of saying yes to everything and saying, "Okay, why not?" And the question is, why not? So when it was why not, it was translated into a reality and came into our lives. And Millie, of course, is a very spontaneous person herself. So the whole, pressure or the activism of Penguin, along with Shobha De's, of course, riveting writing, which she writes, inspired one. But believe me, it was a tough task. It wasn't easy because we are used to writing in a fairly comparatively technical manner and just describing and saying this is the law, this is what the Supreme Court says, or this is what the High Court says, and this is the way the statute should be read, which by the way the Harvard Law School also says very often. It is not that you should say what the law is, but what the law should be. So somewhere down the line, this is one of those translations, but it took an attempt and several copies of writing, and of course badgering by Millie from time to time, which put us into the right perspective to get the product that you have seen ahead of you. But even if I read it now, I do find actually something which I would like to hear. There is some law, so it's a mix. It's an intermix. It's an intermix of law and the social awareness and also the environment. Please understand, I have been party to some of these cases, as much as seen these cases happening, and actually our blood is curdled hearing such stories. So what really, how the society responded, how society is changing, how the society wanted the law to change, how the law changed. Each of these features actually interfaces itself with also who was it, the butler, the Agatha Christie story. Was the butler who did it. So between all these weaves, I think that's what put the whole idea together. And really, it's a lot of team effort. We've all worked very hard on it, and I've had several people helping me on this because a lot of research also was required, by the way. Thank you for that. I actually would like to lead this into opening comments by all our esteemed panelists. और इससे पहले कि मंत्री महोदय मैं आपसे आपके ओपनिंग कमेंट्स मांगू, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगी मैम की बुक से, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरप्ले है बिटवीन पीपल एंड द जस्टिस सिस्टम, जिससे reawakening of the concept of true justice and reemergence of the ideal सत्यमेव जयते, इसको मद्देनजर रखते हुए आप, क्योंकि आप भी वकालत की डिग्री आपकी लंबी डिग्रीज की लिस्ट में जुड़ी हुई है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो इंटरप्ले है लॉ और ह्यूमैनिटी का, लॉ और पीपल का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कहना चाहेंगे एज ओपनिंग कमेंट्स? सबसे पहले तो मैं श्री समीर कोचर साहब, चेयरपर्सन, रेखा जी शायद अभी जुड़ी नहीं है, जेठमलानी साहब जो मेरे साथ राज्यसभा में मेरे सहयोगी हैं, और संयोग है कि इनके पिताजी राम जेठमलानी के साथ भी मुझे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रहने का मौका मिला। पिंकी आनंद जी, मिस गौरी गोवर्धन जी, मिल्ली ऐश्वर्या जी, गुलपनाग जी और रोहन कोचर जी, और सभी हमारे श्रोता और दर्शक, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले पिंकी जी को और गौरी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये पिछली शताब्दी और उस शताब्दी के बहुत ही बहुचर्चित केस हों, चाहे वो 26/11 रहा हो, या राजीव गांधी की हत्या रही हो, श्रीमती गांधी की हत्या रही हो, जिसका लाल कांड रहा हो, या तंदूर कांड रहा हो, या और भी केसेस हैं जो बहुत ही देश को राह देते थे, वो रंगा बिल्ला वाला, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा वाला केस रहा हो। अपने 11 चैप्टरों में 11 महत्वपूर्ण जो मुकदमे रहे हैं या कांड रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का भी काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से एक वर्ग विभाजन तक होने की स्थिति आई, और अलग राष्ट्र की मांग तक उसमें फिर उनकी मांगों में शामिल हुई।
तो ये सारी घटनाओं के बारे में लोगों की याददाश्त चूंकि कमजोर है, निर्भया कांड हो, निठारी कांड रहा हो, गुट्टू कांड रहा हो, हमारा वो तंदूर कांड उनका रहा हो, ये सारे कांड उस समय देश को हिलाने वाले थे। जब गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का हत्याकांड हुआ था, मैं छात्र था तब, जिसको रंगा बिल्ला ने अंजाम दिया था उस समय। इनकी किताब से केवल ये नहीं है कि ये केस क्या हुए, कन्विक्टेड हुए, उसमें कैसे एविडेंसेस आई, लेकिन उससे ये भी प्रेरणा मिली है कि बच्चों की सुरक्षा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और बहुत ही, बस पिंकी जी ये कह रही है कि लेमैन के लिए उन्होंने ये किताब लिखी है, तो लेमैन अंग्रेजी नहीं जानता ये, और बताते हैं जब तक इनका हिंदी अनुवाद नहीं आएगा और क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं आएगा तब तक आम आदमी तक ये इतनी प्यारी पुस्तक है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं सोचता हूँ कि खान मार्केट की कुछ किताब दुकानों तक या कलेमिन की लाइब्रेरी तक है, और मैं चाहता हूँ कि ये किताब हमारे गृह मंत्रालय में भी रहनी चाहिए, और लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में भी रहना चाहिए। और साथ ही इस किताब के पढ़ने से हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है कि कैसे एविडेंस कलेक्शन हुआ, कैसे एफआईआर हुई, शुरू में केस सामान्य तरीके से लिया गया, फिर सिविल सोसाइटी ने उसको गंभीरता से लिया, फिर मीडिया ने गंभीरता से लिया, तो वो चर्चित कांड हुए, और बाद में मुझे लगता है इन सारे जितने केस हैं लगभग सभी में कन्विक्शन भी हुए हैं, और वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले 30-35 साल में जो महत्वपूर्ण केस रहे हैं वो सरकार की तरफ से और वादी की तरफ से भी उन्होंने लड़ने का काम किया है। तो ये उनका जो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है उसको एक पुस्तक के रूप में उन्होंने यहाँ पेश किया। विचारों का युद्ध जब होता है तो उसमें पुस्तकें ही हथियार के रूप में हमें काम करती हैं। तो मैं बस ये और कहना चाहूंगा कि आज भी 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से हुआ है कि ये राजद्रोह के मामले में अभी डायरेक्शन दिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार समीक्षा न कर ले तब तक कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में जो 375 आईपीसी बलात्कार या अननेचुरल सेक्स की तमाम सारी एफआईआर आजकल हो रही हैं, उसके मामले में आज हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने उसको सही माना है और एक ने उसको सही नहीं माना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला है, और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और 3 जजों की बेंच इसको शायद तय करेगी। तो समय काल और परिस्थितियों के अनुसार क्रिमिनल्स भी हाईटेक हो गए हैं, तो वो पुलिस से एक कदम आगे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा ये तो पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन इन केसों को कन्विक्शन कराने में भी बहुत एड़ी चोड़ी का मैं चाहता हूँ कि हमारे एचएम भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 का है, जब ब्रिटानिया हुकूमत हमारे यहाँ राज कर रही थी, तो बहुत सी चीजों के पीछे एक उपनिवेशवाद जो उनके था उसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न देशों में उन्होंने कानून बनाए। सीआरपीसी में जरूर हमने अमेंडमेंट किया है 1973 में, लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है। तो ये केस इतने लंबे नहीं चलते, सजा होती और ज्यादा सजा होती बशर्ते साइंटिफिक एविडेंस और शामिल होती। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हम लोग एक परिवर्तन लाने का प्रयास माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी ने सब एक चिट्ठियां माननीय सांसदों को, जेठमलानी जी को भी मिली होगी, और मैं समझता हूँ कि उनके विचार हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होंगे कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, 1973 की सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि केसों में वादी जो है मुकर जाता है, समझौते हो जाते हैं, या दबाव में आ जाता है, या फाइनेंशियल कमजोर होने की वजह से वो सरेंडर कर देता है। तो नार्को टेस्ट है, जैसे लाइट डिटेक्टर है, बायोलॉजिकल टेस्ट जो है, या डीएनए है, सीमन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, फिंगरप्रिंट है, या फुटप्रिंट है, ये चीजें भी जब इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल हो जाएंगी। और हमारा इन्वेस्टिगेशन है, मैडम पिंकी आनंद जी को शुरू की केस डायरियों में बड़ा आनंद आता होगा
जब वो उन्होंने वकालत शुरू की होगी, तब वादी का बयान और निरीक्षण घटनास्थल और 2 चश्मदीद गवाह, चाहे वो सच्चे हों या झूठे हों, उन्हीं के केस डायरी लिखी जाती थी। और मैं समझता हूँ कि 8 साइड में पढ़कर आने वाले जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो आईओ होते थे, उनका साइंटिफिक अप्रोच नहीं हुआ करता था केस के मामले में, इसलिए एक्विटल बहुत केस हुआ करते थे। अब पुलिस भी बहुत साइंटिफिक हो गई है, हाईटेक हो गई है, क्रिमिनल्स भी हो गए हैं, इसलिए इन कानूनों में सुधार की भी आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और तमाम देश के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच जो अभी पिछले हफ्ते की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था ब्रिटानिया हुकूमत के बहुत सारे रिलीवेंट कानून हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे, अब वो उपयोगी नहीं है। तो ऐसे 1450 कानूनों को समाप्त करने का मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। और 3 महत्वपूर्ण आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत शीघ्र बदलाव करने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। मैं ये किताब जो है, ये जजेस के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और वकीलों के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगी। और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो किताब के रूप में सामने आया है। और पुनः एक बार मुझे 70s का गीता चोपड़ा कांड याद आ गया है। और मैं खुद भी पुलिस में रहा हूँ 10 साल तक, तो मैं इस किताब को बेहतर एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 1000-2000 इन्वेस्टिगेशन राइट फ्रॉम 323 आईपीसी से लेकर के और मर्डर तक किए हैं। तो मैं इन केसेस, ये केस अपने आप में एक स्टडी वाले केस हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसी पुस्तक जो है कोर्स में भी शामिल अगर हो जाए, केस स्टडी के रूप में शामिल हो जाए, तो भी बेहतर है। ये आपराधिक इतिहास का के जो महत्वपूर्ण केस को विभाजित करने का भी प्रयास किया है, वर्ग विभाजन भी हुआ है, और इसमें सांप्रदायिकता भी बढ़ी है। ऐसे केसों में पुलिस का प्रोटेक्शन क्या रहा, प्रिकॉशन क्या लिए गए, कैसे गवाहों को गवाही दिलाई गई है और कैसे जो है कन्विक्शन कराया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पिंकी जी से ये भी उम्मीद करता हूँ, गौरी जी से, कि भविष्य में अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ और भी अच्छी पुस्तकें लिखेंगी, जिसको पढ़ के मुझे लगता है कि जेल में जरूर ये भेजनी चाहिए, और अंग्रेजी में ना हो या उसका अनुवाद हिंदी में हो, तो क्रिमिनल्स को बताया जाए कि क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाता है, बशर्ते जो एजेंसीज हैं उसको पढ़ना का शऊर हो उनको। जैसे कहीं भी अपराध होगा तो फुटप्रिंट होगा, फिंगरप्रिंट होगा। भगवान को पता था कि आने वाले समय में बहुत अपराध होंगे, तो उन्होंने सबके फिंगरप्रिंट दुनिया के हर आदमी के अलग बना के भेजे हैं, बायोमेट्रिक सबके, हमारी आंख की पुतली सबकी डिफरेंट है। तो ये एक क्रिमिनल्स को भी, बल्कि तिहाड़ जेल के हार्ड क्रिमिनल्स को भी ये पुस्तकें वहाँ हिंदी अनुवाद में या क्षेत्रीय भाषा में पहुंचे, कि आप कितने भी होशियार हो, एक दिन निश्चित तौर से आपकी जगह विभिन्न राज्यों की जिला जेल या सेंट्रल जेल में ही आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी, मैंने कहा ना कि क्रिमिनल कितना ही होशियार हो, विजिटिंग कार्ड छोड़ता है, हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत साइंस ग्रेजुएट आ रहे हैं, पुलिस एकेडमी का सिलेबस चेंज हो गया है, जो हमने कभी पढ़ा था उससे डिफरेंट स्टडी आजकल पुलिस एकेडमी में हो रही है। तो क्रिमिनल्स के लिए ये बुरे दिन शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बघेल साहब। मैं अब गौरी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन देते हुए मैं ये भी पूछना चाहूंगी, गौरी, you wrote this book as a law student. B, you come from a home where both your parents, practice law. How does that work out for someone who is a young person navigating through their own challenges, both as a teenager and then later as a college-going person? How did that feel? And of course, how did it feel writing this book as a law student with a towering personality like your mother as your mother? So I'm
going to answer the whole thing in one go because I cannot demarcate within the three questions, broadly speaking. But, as first I'm going to go ahead with saying what it was when I was a law student as opposed to now that I'm a full-fledged lawyer. जब आप law student होते हैं, तो आपको लगता है कि there is an ideal world there. And, enthusiasm होता है, motivation होती है. You just want the justice to be done. But when you start practicing law, you see the little things that matter that you cannot be taught in classrooms or through case studies. It's something that you learn by experience, by guidance. So definitely there is a big shift in my own perspective from when I actually wrote the book and now that I look back and see, now my perspective has completely changed as a lawyer, as a practicing lawyer. And it's just different. It's very different. As a student, you just feel like everything is ideal, but it's not. And, growing up, having both my parents as lawyers, I think people ko lagta hai that, we spoke about law on the dining table or, that's all what we spoke about. But honestly, our family was as normal as any other family. We discussed everything but law because wo to pata hi tha that, ye to expected hai. So, yes, we did discuss law only when there was something in the papers, to be honest, not something that would come up every day on the dining table. But it's just growing up, having lawyers as your parents, it's a little scary just because you know what you're getting into, yet you don't know. you see them doing this all their life. There is some kind of interest and some kind of excitement to it, but at the same time, there's so much, there are such big shoes to fill in, and it's just it's just somebody who's not just me, not just for a lawyer. I mean, anybody whose parents who have decided to go in the same profession as their parents probably feel the same. That's just universal across, I think, all professions. Thank you for that, Gauri. My next question is to Rekha ji. Rekha ji, आप NCW के साथ हैं और क्या आपको लगता है कि जहां तक कि अगर महिलाओं की बात की जाए, जो पिछले कुछ सालों में जुडिशरी की तरफ से एक पहल हुई है, उससे आज की तारीख में अगर देखा जाए जो वुमेन इश्यूज हैं और जो 30 साल पहले थे, आपको लगता है कि थोड़ी एम्पैथी ज्यादा है जुडिशरी की तरफ से, और आपको लगता है कि कंडीशन उस एम्पैथी की वजह से बेटर हुई है? Good evening, Gul, and good evening to all the panelists. And first of all, let me congratulate Pinky ji for coming up with such a fantastic book. I have gone through 3/4 of book I've finished because of my engagements. I could not finish the whole thing, but I think this book is going to be a change maker. हम लोग जो मीडिया में पढ़ते थे केसेस, अगर उनको हमने देखा है अच्छे से तो इस बुक के थ्रू देखा है, और इनमें से कई केसेस ऐसे हैं जिन्होंने सोसाइटी को बदलने का काम, उनके माइंडसेट को बदलने का काम, और इवन कुछ जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई इन केसेस के, और कुछ लॉज चेंज हुए इन केसेस के कारण से. I again congratulate to Pinky ji for coming up with this book. जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि 30 साल पहले जिस तरह की परिस्थितियां थी देश में और किस प्रकार ये चेंजेस हुए जुडिशरी में और इनफैक्ट अवेयरनेस में भी और महिलाओं के अवेयरनेस में भी, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है. चाहे आप महिलाओं के अंदर जो अवेयरनेस आई उसमें चेंजेस जो आए हैं,
और जो भी जुडिशरी के जजमेंट्स है उनके कारण या लॉज चेंज हुए हैं, जैसे पिछले कुछ सालों में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, वो अभी पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर ही आया है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट जो आया है 2013 वो आया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये 2013 में ही आया, और इनमें से ही एक केस है जिसमें जो मेंशन है वो उसके कारण आया। ऐसे जब केसेस आते हैं तो वो जनता को भी मुझे लगता है झकझोर देते हैं, और उनको भी थोड़ा जगाने की जरूरत होती है। और मीडिया ने भी इनमें बहुत काम किया, जो मीडिया आगे आया इसमें और जो मीडिया ने बातचीत की, मुझे लगता है उसके कारण भी लोग जागे। और ये बुक भी मीडिया के ही उन कामों के एक और कड़ी जोड़ेगा, लोगों को अवेयर करेगा। बट जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, यदि ये बुक हिंदी में होगी तो इसकी रीच जो है ज्यादा लोगों तक होगी। अगर हम चेंजेस की बात करें तो मुझे लगता है सोसाइटी के माइंडसेट में, वर्किंग ऑफ पुलिस में 30 सालों में ये सब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज अगर आप एक महिला के साथ कुछ होता है तो वो बात करती है, खड़े होकर बात कर। पहले तो ये भी नहीं होता था कि कोई पुलिस थाने तक जाए और अपनी FIR कराए, बहुत मुश्किल से महिलाएं जाती थी। आज वो जा रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं। मुझे लगता है ये सारा अवेयरनेस के कारण हुआ है। हाँ, हमें और बहुत कुछ करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिकॉज वी स्टिल विमेन स्टिल आर suffering many sexual violences or many discrimination against them. So we have to fight for those things. But yes, there is huge change in the society. Then there is change in the political participation of women, which is also strengthening them. And if you see that 73rd or 74th Constitutional Amendment Act जो आया था 1992 में, उन्होंने 1/3 of total seats में जो रिजर्वेशन किया पंचायती और पंचायत लेवल पे और म्युनिसिपल लेवल पे, उसने भी बहुत बड़ा चेंज लाया। आज बहुत सारे स्टेट्स हैं, मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहाँ 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। ये भी एक सी चेंज लाया लोगों के माइंडसेट में। और महिलाओं के लिए आगे बोलने का, अपनी, जब तक मुझे लगता है हमारा महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजनीति में नहीं होगा, तब तक पॉलिसीज में चेंजेस नहीं आएंगी। और आज हम देख पा रहे हैं कि वो भी, आज हम अगर बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलप एम्पावरमेंट की, तो वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चेंज है फ्रॉम लास्ट 30 years। और ऐसे चेंजेस मुझे लगता है समाज में तभी आते हैं जब ऊपर से ट्रिकल डाउन करता है, जब गवर्नमेंट इसकी बात करती है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इसकी बात करते हैं, वो नीचे तक ट्रिकल डाउन कर रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी इट इज लाइक हाफ फिल्ड ग्लास, वी हैव टू fill more. So whether you see it is half empty or half filled, it is your perspective. But yes, we need to work more on these things where we think that we have gender equality in the society. But yes, the dialogues like this one will change and will change the mindset of the people. Thank you, Rekha ji. That was very, very insightful. And I think as I go over to Millie for my next question, of course, asking her for her opening remarks, I think, Millie, you have your task cut out for you. There has been an unequivocal suggestion coming in both from the Honorable Minister as well as from Rekha ji that this book must be translated into Hindi. And I would say, why just Hindi? All the other official languages of the country, because this is something that everybody can definitely benefit with. I mean, I would say we have 22 official languages and it should come in all of them. And I'm sure there will be a lot of takers for it. And as Gauri was saying, her perspective has changed from a law student to a practicing lawyer. And I think
that is something that this book would help with. Would you like to shed some light on the reasons that you saw that this book should be published, and why you think it's so important for lay persons to understand law? A little bit of perspective from my side. As a lay person, when I would see the law, I'd be like, but you can see this person is guilty. And now you realize that's blasphemy. As somebody who knows the law, you cannot say that. Everything, as the Honorable Minister has said, comes down to the Evidence Act, which, yes, is dated and is in terrible need of upgradation. But the point still remains that why would you say this is a must-read book for lay people? And of course, I'm bundling many questions because we have paucity of time. But these are really essentially my ask of you is your opening remarks. Keeping in mind these two things, why would you think this book is a must-read for lay persons? And what made you publish this? Hi everyone, good evening. It was actually quite interesting listening to everyone and understanding different aspects and perspectives on the book. I published this book for two very simple reasons. I loved Pinky when I met her, and I felt that she's very straightforward, forthright, and I felt that we could actually bring this book out, because books also take some time to publish. It's not so easy. There is a long gestation period, and we have to work like a team, and the chemistry has to work. And in my experience, I always go with my gut. So I thought that this would make a good team, and I think it turned out like that. It isn't easy to write a book for anyone. Let me just say that, because it requires a lot of discipline. It's just not, you can't just think one day that you write a great book and it happens automatically. There's a lot of effort, discipline, dedicated effort that goes on in the making of the book and various aspects of it. And this book was a combination of technical and interesting facts and insights. So we have to maintain the balance, So like Pinky said, there is a bit of law there, because these are actual real cases, things that we have, grown up listening to and heard about or read about a lot in the media. But what the book essentially does is we've shortlisted cases that actually had an impact on the country, on law, on society in general. But there are also cases where she was involved and she had insights to share. So you have all of the information in one place and presented simply, not like technical law books, which I think are scary for most of us lay. So that was the objective, and I think it has worked, because the book has done very well. And I take your point on translations, because I think the book should be available to even more people in various languages. Hindi being one, but we do bring out our books in various other regional languages like Tamil, Telugu, Marathi, and so on. So I think there is a potential to reach newer audiences in those languages as well. And I think before I end, I would urge Pinky to write more, because it was lovely pestering you the first time around. And I think there is so much more to say, and I think we are ready for another one. I certainly am. So I'm going to leave you with that thought, and I hope that happens soon. I have an interjection here, Gul. So may I, with your permission? I know you're asking a question, moderating, but two things. I mean, the pestering of Millie, and let me tell you what she pestered me maximum for. It was this mix between law and reality check. Because ultimately, for example, when portions, the usual legal kind of lingo that we used to do, quote passages and make propositions. See, there's too much of this, and the slashes that are there, if you saw them, she's much less on the screen than she is otherwise. But these are the way she's got it going. And just for our reference, this book has been published in Japanese, by the way. Yes, Wow. internationally also there is a huge. Yes. Wow. Thank you for that. I actually want to go back to the Honorable Minister. Baghel साहब, अभी इन्होंने रियलिटी की बात की, लॉ और रियलिटी. एक तो होता है कानून और एक रियलिटी जो असल में हमारे समाज में प्रचलित है. उससे
उससे मेरे दो सवाल हैं। मुझे बताया गया है कि आपके पास समय थोड़ा कम है और आपको निकलना पड़ेगा शायद, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जिसका पार्ट बी भी है। एक का तो आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि क्यों अब बताइए हुकूमत के वक्त की कानूनों को अब दोबारा नई नजर से देखने का मौका है हमारे पास, और वो इंटेंशन भी बहुत क्लियरली इस सरकार ने दिखाई है। उसमें राजद्रोह की बात तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे दूसरे कानून हैं जिनकी आप बात ऑलरेडी रख चुके हैं। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगी, वो रियलिटी का मुद्दा छेड़ते हुए। क्या आपको लगता है कि एक कानून और न्यायालय को अप्रोच करने के दो पहलू होते हैं, एक जिनके पास मीन्स हैं और एक जिनके पास मीन्स नहीं है, यानी हैव्स और हैव नॉट्स। क्या क्या कानून और लॉ हैव और हैव नॉट्स के लिए अलग तरीके से ऑपरेट करती है? लेटर में तो नहीं करती है, पर स्पिरिट में। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत का जो संविधान है वो सबको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का वादा करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14, सारे संविधान विशेषज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये साफ कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डूइंग the state should not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। और इसलिए हमारे देश में न्याय की दृष्टि से सब एक समान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही अधिकारों की सूची में न्याय शब्द से शुरू होता है, और जो हमें ये दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने जन जन तक न्याय सरकार पहुंचाने का सरकार का अहम कर्तव्य को माना है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की का प्रावधान है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, तो ऐसी अथॉरिटीज ये संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि न्याय हमारे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। हर स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जो स्टेट लोक अदालत होती है और राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत होती है, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1.81 करोड़ केसेस का निपटान एक साल में हमारी लोक अदालतों ने किया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे समाज के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा भारत सरकार की एक अहम परियोजना है जो मैं आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि टेली लॉ स्कीम लागू की गई है। टेली लॉ स्कीम का उद्देश्य गरीब एवं निस्सहाय लोगों को निःशुल्क विधिक सलाह देना होता है। ये एक प्री लिटिगेशन डिवाइस है। सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही सलाह जरूरतमंद तक अगर पहुंच जाए तो इस योजना का उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने टेली लॉ को ऐसे डिस्क्राइब किया है, सबका साथ सबका विकास, इसके साथ सबको न्याय। मैं इस बात को मानता हूँ कि टेली लॉ, लोक अदालत, विधिक अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, तो अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, तो ग्राम न्यायालय का भी हम लोगों ने गठन करने का काम किया है। लोक अदालतें भी हो रही हैं और आजकल तुरंत बहुत फास्ट ट्रैक भी हुई है। जैसे रेखा जी ने बताया कि कई केसेस के बाद पास्को आया है, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारी कानूनों में परिवर्तन किया गया है, सजाएं भी बढ़ाई गई हैं। तो टेली लॉ के माध्यम से वो प्रो बोनो एक हमारी स्कीम है। तो मैं वकील साहिबानों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तहत हमें जाना चाहिए। मैं पिंकी जी एक बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, मुझे लगता है देश में बवाल भी हो सकता है, लेकिन एक पुस्तक आप ये भी लिखें कि जो लोगों को आजीवन कारावास हो गया है या 20 साल की सजा हो गई है या मृत्युदंड दिया गया है, और अगर ये कहा जाता है एविडेंस एक्ट में कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो फांसी पर चढ़ता हुआ आदमी भी झूठ नहीं बोलेगा अगर उसकी सारी अपीलें खारिज हो गई। एक पुस्तक इस बात पर भी आनी चाहिए कि क्या ये अपराध उन्होंने वास्तव में किया था, क्या इस अपराध में वो इन्वॉल्व थे। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो एविडेंस अगर झूठी एविडेंस है तो वो बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है। झूठे गवाह बहुत अपने स्टेटमेंट को ठीक से याद करके जाते हैं।
मेरा अपना अनुभव है। अब मैं विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के रूप में पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं दिमाग से नहीं कभी बात करता हूँ, मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ। विभिन्न जेलों में जाकर के जो आजीवन कारावास है या जिनको मृत्युदंड हो गया, जिनकी बात हुई, कई बार उनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, लेकिन वादी ने एक रिपोर्ट लिखाई है, मौके के 2 गवाह हैं, डॉक्टरी मुआयना उनके खिलाफ है, सर्कमस्टांसेस एविडेंस उनके खिलाफ होती है, तो हमारे न्यायाधीश लोग उनको सजा देते हैं, ये जानते हुए भी कई बार कि जो है कई बार आईओ की गलती से आदमी का मर्डर हुआ है, एफआईआर हुई है, पर्याप्त एविडेंस नहीं थे इसलिए फाइनल रिपोर्ट लग गई, या कन्विक्शन इसलिए नहीं हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने बहुत अच्छी एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया है और वो इस काबिल नहीं थी कि वो अदालत में चलाई जा सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को न्याय मिले, जल्दी मिले, सस्ता मिले, सुलभ मिले। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे दोनों वकील साहिबान जो राइटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम वकील वो बहुत जूनियर है, उसको भी वो अगर अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दे तो भी मुझे नहीं लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को लड़ सकता है। इसलिए लीगल अथॉरिटीज हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक है। मैं एक केस का पिंकी जी के साथ एक शेयर किया था मैंने एक मंच, उसमें मैंने बताया था कि किन्हीं कारणों से मुझे जेल जाना पड़ा, राजनीतिक कारणों से, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहूँगा। तो मेरे पास एक कैदी दो कैदी एक कैदी को लेकर के आए और कहा था उनकी बात सुनो, तो मैंने उससे बात की तो वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो उड़िया जानता था। तो वो पिछले 13 महीने से फिरोजाबाद की जेल में निरुद्ध था और इस मामले में निरुद्ध था वो ये 379(411) में, और चोरी क्या थी, 5 किलो लोहे की चोरी में और उसको बंद किया गया था। तो वो एक्चुअली गंजाम जिले का रहने वाला था, वहाँ उड़ीसा का। उसने सुना कि फिरोजाबाद एक जिला है जहाँ चोरियों का काम होता है, वहाँ हर आदमी को जॉब मिल जाता है, इस से वो वहाँ से गंजाम से आया और एक शोरूम के बाहर, शटर के बाहर सो रहा था। पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। ये हमारी सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार की बात है। और उसको 379(411) आप लोग हुए थे चोरी में। अब वो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने 13 महीने तक ये नहीं देखा कि 302 वालों की जमानत हो गई है, डकैती वालों की जमानत हो चुकी होगी, या पास्को वालों की हो गई होगी, या एक आध एनएसए वाले की भी हो गई होगी, या एक आध गैंगस्टर भी बाहर हो गया। ये लड़का 13 महीने से क्यों निरुद्ध है और हर बार उसका जुडिशियल रिमांड दिया जाता है। तो मैंने उससे बात की तो उसने ये बात बताई, तो मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ तो तुम्हारी मदद करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जिसका अपराध से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था, वो शहर में पहली बार आया था, 2 घंटे उसको आई हुआ था और उसको पुलिस ने 379(411) में जेल भेज दिया। अगर जैसे मैं आईएमए के लोगों से कहता हूँ कि कुछ सोशल वर्क करें तो मेडिकल कैंप लगा देते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत कम देखा है। मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि वकील लोग ऐसे गरीब लोगों के मुकदमे अगर वकालतनामा लगा के 15 मिनट की बहस कर देते तो उसकी जमानत हो सकती थी। तो इस केस को मैं जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा, मुझे लगता मुझे जेल नहीं जाना था, मुझे जेल उसके निमित्त जाना पड़ा कि उसको बाहर आना था। तो वो उड़िया जानने वाला एक गरीब घर का बच्चा मजदूरी करने फिरोजाबाद आया था। और मैं उम्मीद करूंगा कि नए लड़के, नए एडवोकेट्स हैं, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए भी ऐसे तमाम लोग जो पैरवी, इसको अदम पैरवी कहते हैं क्योंकि जिस समझ पाएंगे उर्दू का वर्ड, अदम पैरवी में कई लोग सजा पा रहे हैं अथवा उनकी बेल नहीं हो रही है। और बेलेबल भी ऑफेंस है, लेकिन कोई बेल लेने वाला नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है कौन आदमी किस जेल में कहाँ निरुद्ध है। उसके पेरेंट्स 1 साल तक देश के शहरों में घूमते रहे। संयोग था कि मेरी उससे मुलाकात हो गई। तो ये बात सच है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक आम आदमी को अपने केस की पैरवी करने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन मोदी जी की सरकार पे ये कहा गया है कि टेली लॉ है और हमारी लीगल अथॉरिटी, लीगल हमारी एजेंसीज हैं, अथॉरिटी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तालुका लेवल पर हैं, और वो ग्राम न्यायालय की भी एक अवधारणा है। एक्चुअली क्या है, देहात में पंचायतें समाप्त हो गई है। कोई व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित और इम्पार्शियल नहीं रहा है कि वो न्याय अन्याय नीत अनीत और सदाचार दुराचार में वो एक न्याय करे, उस न्याय को लोग मानने के लिए बाध्य हों। क्योंकि लोगों की अब वो रेपुटेशन नहीं रही है, पार्टी से एफिलेटेड हो जाते हैं या कास्ट से एफिलेटेड हो जाते हैं या अपने गोत्र के बारे में सोचते हैं। तो जो हमारा
पंचायत हुआ करती थी न्याय पंचायत स्तर पर, और जो पंचायतें निर्णय करती थी वो पंचायतें मान्य होती थी। तो मेरे गांव में 70 साल तक 323, 504, 506 की भी तहरीर थाने में इसलिए नहीं दी गई कि मेरे ग्रांड फादर पंचायत कर देते थे। अब किसी ने किसी के खेत का गन्ना तोड़ लिया तो ये थाने तक नहीं जानी चाहिए। ये जो भी पेटी ऑफेंस है, या नाली के झगड़े हैं, पंडारे के झगड़े हैं, गोबर के झगड़े हैं, अथवा पशु किसी के खेत में चला जाता है, उसके ऊपर झगड़ा होता है, फसल तो वो 50 रुपए की खाता है, लेकिन मुकदमेबाजी में उसके हजारों रुपए खत्म हो जाते हैं। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारा जो एक पंचायत सिस्टम था वो एक बार डेवलप होना चाहिए, और हमें छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस में गांव के स्तर पर भी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और आप ये भी देख रही होंगी, सुप्रीम कोर्ट तक आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जाता हूँ, कि हमें देहात के हजार लोगों में जब मैं पूछता हूँ कि आपके पूरे गांव में या आपके रिश्तेदारों में 323, 504, 506, 147, 148, 149, 323, 334, 332, 326, 452 आईपीसी में कितने लोग सजा काट रहे हैं आफ्टर द डिसीजन? तो लोग कहते हैं कोई सजा नहीं काट रहे हैं। अब ये सजा रहती है गिरफ्तारी से लेके बेल तक, और आजकल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि 7 साल तक की जिन मुकदमों में सजा है, से कम में सजा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। चार्जशीट जाएगी, तारीखें पड़ेंगी, कन्विक्शन हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल का जो है, लेकिन अभी भी अपराधी और आम जनता सजा उसको मानती है जो थाने से पकड़ के ले जाया जाता है, और उसके बाद वो जेल भेजे जाते हैं। बाद में तारीखों की लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी ट्रायल के बाद भी हमको सजा हो सकती है। तो जब 323, 504, फिर क्या होता है, नेता लोग बैठते हैं, समाज के सरपंच लोग बैठते हैं, और जब हजारों रुपए बर्बाद हो जाता है तब जाकर के एफिडेविट दाखिल होते हैं और समझौता होता है। तो मैं तो ये भी करना चाहूंगा कि आम गाँव में मैं नहीं कहता हूँ कि अगर किसी के पिताजी का मर्डर हो गया तो कभी पंचायत होनी चाहिए, या बलात्कार में कभी पंचायत नहीं होनी चाहिए, डकैती और लूट में कभी पंचायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सडन प्रोवोकेशन में जो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, अशिक्षा के कारण हो जाते हैं, कानून की जानकारी की वजह से जानकारी ना होने से हो जाते हैं, तो फिर उसमें बहुत समय बर्बाद होता है और पैसे की बड़ी बर्बादी होती है। हमारी सरकार ने टेली लॉ, प्रो बोनो स्कीम, उसके साथ साथ है लीगल अथॉरिटीज ऐसी की है, नालसा वगैरह है, कि हम आम आदमी को, और आजकल जो है लोक अदालतों के माध्यम से, जैसे कहते हैं सरकार के मुकदमे हैं, हम 1,81,00,000 मुकदमों को जो है लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री महोदय. I have a question for you, Pinky ma'am, and this will be my last question before I'll have to hand over the moderation to Rohan, because I have something else at 7 o'clock. Pinky ma'am, if you would want your readers to take one thing away from this book, what would that be? I think it is faith. I think it is the fulfillment of something that happens. And the second connected part would be the active engagement of civil society. I think personally, that has been the biggest take I have from the cases that I've covered in this book. That civil society participated in one way or the other and resulted in huge changes in law or even the justice delivery system to take note. Now, most of these cases may have gone by had it not been for the active engagement of civil society, including Billa Ranga, by the way. Mr. Bagel, you remember Billa Ranga ke case mein, there were so many witnesses who came forward. The police, in fact, was fairly ineffective. They didn't do much, but the civil society actually engaged in it, and that resulted in changes. So my belief is that law changes social norms, and I do believe that society also changes law and compels it to change when it is standing still. I think that's very well said, because what you've said repeatedly is that law is almost like a mirror to society in a way. I mean, law has to ultimately look for the greater good, and with times law must change, not just with times, but sometimes things can take a very different turn unless and until civil society pressure builds up and forces a sense of compliance in terms of a demand for what is considered to be justice served. So I think that's really well said. And I think my takeaway from that would be that civil society must not
must not rest. I mean, at any given point of time, they must always stand up for what they believe is right. So Satyamev Jayate is the kind of takeaway key that we have here. Thank you. I think we have time for one more question before I can hand this over to Rohan, who is going to wear after this the moderator cap. Has Mr. Jethmalani joined us? No, he hasn't. Okay. I actually want to go back to Rekha ji. You already mentioned when we last on your last response to my question that today we have a lot more recourse to law than we did, say, 30 years ago. In fact, a lot of the far-reaching changes in society, specifically with regard to women, when it comes to prevention of sexual harassment at workplaces, 2013, which in a way came out of the Vishakha guidelines, which came out of a landmark judgment of a really gruesome case, because I think that interface of civil society, which is what Pinky ma'am just spoke about, would you like to give your take on that? कि जब civil society की तरफ से एक सामाजिक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, उससे जो असल में महिला सशक्तिकरण है, वही तभी प्रभावित हो पाता है? Not only civil society, I will say, समाज का कोई भी तबका जब जाग कर अपनी आवाज उठाता है, तो मुझे लगता है फिर चाहे वो जुडिशरी हो या गवर्नमेंट हो, उनको सुनना ही पड़ता है। और चाहे नए लॉज बनाने की बात हो, अमेंडमेंट की बात, या कोई जजमेंट देना हो जजेस को, काफी प्रभावित करता है जब समाज खड़ा होता है किसी भी केस में। हमने जो इस बुक में भी देखा, जितने केसेस थे, जैसे अभी पिंकी जी ने कहा बिल्ला रंगा के टाइम पुलिस ने वो काफी खराब किया था वो केस, और सोसाइटी के बहुत सारे लोग आगे आए जिन्होंने देखा था उन बच्चों को उस कार पे बैठे हुए, या जिन्होंने भी वो विटनेस थे वो आगे आए और उन्होंने वो केस बढ़ाया। सिविल सोसाइटी बाद में पार्ट बनी, लेकिन वो जो विटनेसेस थे, अगर वो पीछे हट जाते तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में प्रॉपर जजमेंट हो पाती या जस्टिस मिल पाता। बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है महिलाओं का साथ आज भी नहीं देते। और आज जो सोसाइटी है वो ज्यादा बिलीव करता है कि वीडियो बनाए, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई सड़कों पे कोई ऐसी महिला के साथ कुछ गलत बात हो रही है, they would rather prefer to make a video than dialing 100 number, which is very sad. बहुत insensitivity देखी गई ऐसे बहुत सारे केसेस में, जहां अगर सोसाइटी के कुछ लोग जो प्रेजेंट थे वो खड़े होते उस टाइम महिला के साथ, तो उसके साथ जो भी व्यवहार हुआ है या जो भी घटना घटी है वो नहीं घटी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं। और आज जब मैं अपने केसेस डील करती हूँ, मुझे लगता है सिविल सोसाइटी पे हम पूरी जिम्मेवारी डाल सकते हैं, हाँ सिविल सोसाइटी जाके, लेकिन सिविल सोसाइटी में भी जो लोग हैं वो इसी सोसाइटी से आते हैं। जैसे हम कहते हैं पुलिस में भी जो लोग हैं इसी सोसाइटी से आते हैं, और पुलिस में भी जेंडर सेंसिटिविटी थोड़ी कम नजर आती है, और हम लोग हमेशा जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी करने की कोशिश करते हैं। NCW BPRND के साथ मिलकर कर भी रहा है। अगर सेंसिटिविटी की जरूरत है तो पूरे समाज में आने की जरूरत है। अगर हम समाज में, और समाज किन से बनता है, हम परिवारों से बनता है, फैमिलीज से बनता है, तो मुझे लगता है फैमिलीज में चेंजेस लाने की जरूरत है। सबसे पहले अगर परिवार में ही अपनी बेटी और बेटे को पालने की जो अलग अलग दृष्टिकोण है वो अगर खत्म हो, तो वो धीरे धीरे समाज और फिर हम कहेंगे राष्ट्र में वो चेंजेस जो हम देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटिविटी लोगों में आना चाहिए, या सिविल सोसाइटीज को ज्यादा काम कर, हम क्यों उन पे सारा बोझ है? हम सबके ऊपर जिम्मेवारी है, मेरे पे, आप पे, समाज के हर तबके पे। क्यों नहीं हम सेंसिटिव हो पाते उन जरूरतों को? और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी दी है, जो हमारे नेचर में हमारी इक्वालिटी है, उसी को तो हमको फॉलो करना है। फिर हम क्यों इतने डिवाइड हो गए जेंडर उसमें? क्यों हमने पूरे समाज को बदल डाला? Yes, civil society has to come forward, and we also has to support genuine civil societies. So genuine I'm saying because when I'm working in NCW, I have seen we have been
funding many programs to civil societies. But unfortunately, many a times we give first installment and then those people just vanish. We don't even get the proper report, and we can't do anything. But there is now mechanism to check on these things because Niti Aayog ke saath register hona chahiye, these civil societies and all that. Saying all this, I again will go back to my first point, that we as member of the society need to be more sensitive towards the needs of women, towards the safety and security of women. When we are seeing that times are changing, बहुत कुछ change हो गया, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि harassment के तरीके भी change हो गए. आज साइबर प्रॉब्लम्स जो है, साइबर सिक्योरिटी जो औरतों की है, वो बहुत बड़े स्टेज पे है. साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट. हम जहां जहां टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे नए तरीके लोग ढूंढ लेते हैं महिलाओं को हैरेस करने के. उनको भी हमें अगर उनमें भी चेंज लाना है, तो अगेन आई विल कम बैक कि हमें हमारा माइंडसेट टुवर्ड्स वुमेन नीड टू बी चेंज्ड. थैंक यू. Thank you so much for that, Rekha ji. Very, very valid points. And I think the change must come from within our homes if we really want to see change in society. Very, very well said. With that, I'd like to thank all the esteemed panelists. I have a hard stop and Rohan will now take over the role of moderator. Mahesh has now joined us after his parliamentary committee, which he had advised. Pinky, I am so sorry. I owe an apology to you, but it's beyond my control. You know, I would never let you down on timing, but it's beyond my control. And I raced to make this before 7. Good. So, Mahesh, the point is you have been taking care, as I understand, of the question of, virtual courts. And I believe that is one of the most important issues today, as justice for all is not only through talking about law and change in the interface between society and law, but as much from the virtual court, which I think has had its own part. But just to bring you on track, Mahesh, and we'll just take a couple of quick questions from you. Gul has been kind enough to stay, and that's been. Please apologize to your anchor. Really, I'm really so sorry. No, I'm just say I just wanted to say a quick hello to you, Mr. Jethmalani, personal fan, and I'm handing this over to Rohan, who is going to do this moderation. Thank you so much, Minister Saab. Namaskar. Bye, bye, Millie. Bye, Gauri. Bye, Rekha ji. Bye, Pinky ma'am. Thank you so much for making me part of this. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So, Mahesh, on track, we were talking about the book that we wrote and, the trials of truth. And who better than you than to talk about trials of truth and to stand up for the cause of justice? As a public figure, as a Rajya Sabha member, as a lawyer who's defended some of the most major cases in the country, outstanding. I've seen you right through Bombay and through several other phases of your life. It has been amazing. So I don't know, what is your take on books such as this, which are one, written for laymen, as opposed to books written for lawyers, which are legal texts? And two, since I'm here, before you answer that very quickly, and I know you can, the interface between society and law and criminal justice system. Yeah, I mean, first, coming to your first question, the book is an absolute necessity. Lawyers and the legal profession generally, the whole system has this image of being a very esoteric, closed door aspect to it. Fact of the matter is that, lawyers basically are as human as anybody else. And when we conduct trials, it's only because we have our own special learning. But it's very important that books like yours, to show the human side, particularly of what happens, how trials are conducted, how our system works, what is the presumption of innocence, how evidence is led and how innocence is taken very seriously, the presumption of innocence, and ultimately the skills of a lawyer and the etiquette of a lawyer, particularly in the matter of criminal trials, where generally speaking, public sentiment runs against, especially in high profile cases, public sentiment runs high against an accused person. And how a lawyer has to use his deftness, both because of its publicity itself, you have to sometimes handle the press very deftly for a client who's reviled, and also how to use your skill and tact and diplomacy before a judge and make sure that, although he's trained to be completely impartial,
some kind of press, mesmerization goes on subconsciously in his head. So you've also got to try and get over that prejudice, bring your skill, your laws of your knowledge of the Evidence Act. So I think, as you come back to your fundamental point, the actual working about what makes a trial, the bread and butter of a trial. A book is a dire necessity. I must confess I haven't read it, but knowing you, it'll be my first priority on my holiday reading your book. And to the second question, thanks Mahesh for that. And the Honorable Minister was talking about the Evidence Act just before you were here, and he was talking about making some dynamic changes, as Prime Minister has also indicated, changing the colonial laws and bringing up to date, particularly in the scientific developments that have taken place. What is your take on the interface between society and law? I mean, my take has been, just to give you a heads up on this, my take has been that basically civil society has acted as a major pusher, if I might call it that, or a catalyst to push law into a direction at times when law itself has not been able to take itself and catapult itself as much as it should. So that has been one of the focuses, and we've seen that through trials, and we've seen, of course, we've had instances where your father has taken some very amazing stands, and what a human being. But we've seen you with all those film stars and Bombay and the entire fraternity there, looking up to you as a senior lawyer who's taking care of all the concerns with whether it's Antule's case and whether it's any other cases that you've done. So would you just like to give us your take on some of the cases that you have done and the interaction between society and law? One of the questions that was given to me was the question of law coming in. I'll come to society and the law, but about morality and the law. And it's a really hard job being a criminal defense lawyer, particularly. Prosecution lawyers always get the kudos because they're on the side of right. They're punishing a wild person or trying a wild person and trying to get him into jail. But defense lawyers are, they sort of, the reputation is that he's going to use his skill and he's going to mesmerize the court with his advocacy and all that. But basically his client is guilty. Although we have a presumption of innocence, right? At the start of a trial, because of the press publicity that now sort of accompanies every high-profile case, there's almost a feeling that the criminal lawyer, the defense lawyer, is taking up a wrong cause and he shouldn't be doing it. Now, that's contrary to our ethics, frankly speaking. And it's a rule of the Advocates Act, which when my father was the chairman of the Bar Council, he himself had framed, that you cannot let your personal views about the innocence or guilt of your client, even if he tells you he's committed a murder, you are not supposed to judge him. You are supposed to go by the evidence, keep his confidences secret, and you are supposed to deal with it with the utmost objectivity and only. You can't suborn evidence, you can't tamper with witnesses, and I'll come to the Manu Sharma case, which my father had handled. And that's where we had a little bit of a difference and a little bit of fallout. We didn't talk for about 3-4 months after that case, and I'll tell you why. Trust the state Malaris to do that. Yeah. So you know how it is then. But by and large, you should not let your personal convictions come in the way of your choice of. It's contrary to the Advocates Act. It's contrary to the ethics of particularly a criminal lawyer, that you refuse a case because unless you really feel, for instance, I can't take a POSCO case. I've not taken a rape case in my entire career, and I've not taken a POSCO case because I feel I can't do justice to it. Right? So sometimes my clients have tried to persuade me. I said, this is not my area. I'll not do it. Right? It is to some extent a violation of my ethics of my profession, but I've chosen to put on the ground that it's not my area of expertise. I can't do it. Right? So you can get away with that. But now, in Manu Sharma's case, I had a problem. I'll tell you what the problem was. The problem was I was not judging Manu Sharma's guilt or innocence. That's all very well. He's presumed to be innocent unless the evidence led in court leads the judge to believe that he's guilty. Problem was there, I felt that every witness turned hostile. And I believe that when the other side, when a defense, and it was an allegation, of course, even that's presumed to be not true, but it was an allegation. And I felt that if you are going to subvert justice, right, and get an acquittal by those means, then
we have to call into question the very Bar Council rule. If you remember in Manu Sharma's case, a whole lot of people gave police statements and the case was almost cast iron. I remember even today, there was a young man who was a witness at that fatal bar where the shooting took place, called Shyam Munshi. Oh. And he turned turtle after saying that he was an eyewitness and saw the actual shooting. Right? And I will never forget that because he was a young man. And I thought, young men are more idealistic about these things. But he gave a police statement and that's it. And so the dispute with my father was, look, when you are, there are rules of justice. There are prescribed rules of justice in a particular case. If you are subverting the very rules of fair play by which trials are supposed to be conducted, right? In that event, then your side is not playing fair. You can by all means defend the worst criminal, a multiple murderer if you want to, right? So long as the rules by which you conduct your defense are as per ethics and law. But that was the one case where I felt, of course, he only came in at the appeal. So, but he still took the case. And I said, this is the case where the acquittal has been a result of a subversion of justice. We're not playing by the rules of the game. And we had a law, and he got very angry and he said, you don't know what you're talking about. I framed the bar, and then he pulled his seniority and fatherhood on me. And after 6 months, of course, I was, still, I was the one who went to him and said, I'm sorry, I should have listened to you and all that. But that's part of the story. So, of course, that there is, and then coming to society and the law, the interplay between society and the law. There is a huge impact by society on the making of the law. Now, the most important, the most significant matter I can think of is civil society's huge outcry in the Nirbhaya rape case. That changed the whole rape law. You had the reversal of the burden of proof. You had 164 statements being recorded. Procedurally and evidentially, right? The entire law changed after Nirbhaya. And that was largely because it shocked the conscience of the nation to the extent, and particularly women. Women had, candlelight demonstrations and what have you, right? And it changed public opinion. It may still have happened, but there's no doubt that the reaction of civil society and women in particular was a major factor in changing that law. So civil society, and it's happened when, from the times of Raja Ram Mohan Roy and his movement to abolish sati, civil society and reformers have had a huge impact. There's no question about it. Today, we're still seeing it today. We're still seeing, maintenance law for Muslim women, triple talaq, all these things are all societal movements which are. No, you're right, Mahesh. Thank you so much. I think it's been a very engaging conversation, and we've kind of overstretched our time. And thank you for stepping in to share. I'm so sorry for coming late. I apologize to you, Pinky, most of all, and of course all your guests and millions of viewers. I have no doubt are watching your show. Thank you so much. So I'll hand the mic back to Rohan to take over and to close the session. After this very engaging conversation that we've had, and thanks to Gul, who had to leave at 7, and we continued thereafter. Yeah, thank you, Pinky ji. Before Rohan closes it, I just wanted to get in a sentence or two. Welcome, Mahesh ji. This is Samir Kocher here. Thank you. A thing that came out very strongly is the role of civil society. But it takes a lot for civil society to outrage now, versus when what used to happen during Billa and Ranga. So you are seeing a societal degradation or, heightened thick skin to crime. It's the most heinous crime that shakes the society and gets them to participate. Now, how do we change that is going to be a big question, because then you have to change a lot. हमारे ज़माने में एक संस्कार नाम की चीज होती थी जो माँ की गोदी में मिलते थे, and there was a sense of morality and there was a sense of right and wrong, and practically every family used to have that. And by and large, a middle class or a poor India used to live by that. So one byproduct of reforms and economic growth is that there has been a complete erosion in that sense of morality. So how do you manage morality and economic growth is one challenge, and I think that's a huge challenge. The second thing is that today the laws are so complicated. While they impact the common people, they impact the civil society. Civil society has no understanding of it.
when it comes to techno-legal legislation, it could be Privacy Act, it could be something like crypto regulation, it could be gambling. These are very, very complicated issues, and we see that cowboy-style lobbying of USA has come into India, and there is all kind of misinformation that gets peddled, and there is no law to control lobbying. So while lobbying is there, it is not regulated. So fake news and fake blockchain cannot work without crypto kind of nonsense carries on, and it captures the civil society's imagination. And so I don't know how do we address these challenges. If I may, I would want a brief answer to this first from Mahesh and then from you, Pinky, before Rohan closes this. Mahesh ji? No, sorry. The thrust of your question is what exactly? What is? No, the answer to all this was that the society must outrage more. So I'm saying the capacity of South is getting blunted. The capacity of, and the second thing is the society can only outrage about, and you talked about there's a greater participation in lawmaking, but there are so many laws that they can't possibly even understand, and they're going to impact them very intimately, like the Privacy Protection Act. Well, I mean, the Prime Minister has called for a simplification of our colonial legislation, and that whether that's possible or not, because the trouble with law is in a sense an esoteric subject. It is governed by precedents, and then there is terminology used in culpable homicide has a particular meaning. So it is very difficult to simplify, to make law very accessible to the common man. But talking about outrage, I think we have a pretty alert civil society even today. I mean, take something like sedition, right? It is being misused, and you have a very powerful lobby now, right? Even if the law on sedition doesn't go, which I think should not go, but there will be serious measures taken both through the judiciary and the legislature that this law is not misused. So I enter a caveat there. I don't feel that our threshold of outrage has diminished. On the contrary, I feel I think we underestimate Indian society. I think we're a very robust society. And with the advent of social media, right, which in a sense is also divisive, but it's also made people very conscious of issues. And it's made people conscious of their rights as individuals and collectively, both. So, I think the advent of social media has boosted civil society's capacity and inclination to be outraged. Right. So, Pinky, what about you? So the answer is in social media linked civil society, I suppose. Oh, it does. It does. It does lead society. And indeed, the society is sensible enough to actually demarcate. Of course, lots of fake news are there in the market, but society is able to evaluate. And there is an error only in the first instance. When there is a lot of news about the issue in the first, let's say 3-4 days of somebody being arrested or a crime coming to light, suddenly there's this entire motion and everybody's finding everybody guilty and everybody's having an opinion. But that's one part of it. The Nirbhaya one is a prime example of people standing at India Gate, people standing at the ramparts. It may make dramatic changes, and it was across all classes, all sections, gender, women, men. I mean, there was no kind of broad basis excepting to say society. So society is definitely more alert, has more mechanisms to take it up. At the same time, you have a point, Samir. Society overall has become lethargic. Who cares? So I understand what you say. But in cases of major instances, if Nirbhaya was lying on the road, people had a problem with it. People said, yes, it should have been discovered earlier. Yes, she should have been covered. Yes, she should have been picked up. Yes, a woman should have been medically examined. So there is a dichotomy between the two, but you have a point and so do we, as Mahesh and I go. And on the legal part of being technical, of course, law is technical. But at the same time, please believe me, you and I are second generations. We may be second or third, depending on the situation. But the first generation is very alert again. They know the technology, so they will know how the law applies it to the technology. We, of course, may have a harder time being second generation and third generations, but then we are grappling with all that. And law also sometimes enjoys making it more complicated so that everybody can't have access. But that's what today's program is about. That's what it is about. Let them know what's going on. Well, on that note, thank you very much. And over to millennial Rohan Kochhar, who possibly understands this far better than I do. जी, मेरी समझ इस विषय पे कुछ कम है, मगर मंत्री जी ने जो कहा
वो मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया और मैं एक सवाल रखना चाहूंगा इस पैनल के सभी वरिष्ठ वकीलों को, महेश जेठमलानी साहब, पिंकी आनंद मैडम, गौरी गोवर्धन जी। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने देहात के हजारों लोगों से जब पूछा तो पता चला कि आईपीसी की विभिन्न दफाओं में लोग जेल में समय नहीं बिता रहे हैं, सजा होती है तो अरेस्ट और बेल के बीच। और एक बात छिड़ी महिला सशक्तिकरण की, जो कि रेखा शर्मा जी ने भी उठाई, और उन्होंने कहा कि समाज के कोई भी तबके को अपनी आवाज उठानी है तो उन्हें सुनना ही पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में सोशल अवेयरनेस एक एफआईआर दर्ज कराने से ज्यादा बड़ा एक ऑडिट बन गया है। तो मेरा सवाल बस इतना है कि आज की सोसाइटी में सोशल ऑडिट का क्या रोल है? क्या इन क्रिमिनल्स को डर नहीं लगता कि इनके आसपास के लोग इनसे कभी पूछेंगे या इनके परिवार वालों से पूछेंगे कि आपने क्या किया और क्यों किया? मैं एक छोटा सा जवाब दूंगी, फिर महेश जी से बात करेंगे आप। रोहन, इस बारे में उनका जवाब आएगा। एक्चुअली क्रिमिनल्स सोचते नहीं है, ये नहीं सोचते कि समाज में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू इट। दे डू द क्राइम्स। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर बोर्न आउट ऑफ greed, passion, instantaneous gain, instantaneous loss. This is the typical crime sequence. So the deterrence has to be built in through law. I'm sorry to say, as Indian society goes, we really need to have our laws more strictly implemented, because you believe law implemented nahi hoga. I'll do some crime, I'll get away with it, I won't get caught. That belief actually lets you take it away more. But aside from that, criminals don't look at the consequences of their acts. They are so possessed by what they need or want at that point of time, whether it is killing somebody or getting some money or looting or rape, anything. The point is, immediate gratification is something that a criminal looks for in whether financial terms, psychological terms, or physical terms, and that is the manifestations. That's what leads to this entire phenomenon. But our justice system, if made not only effective, we have very good laws, we need to make it more effective. If we do that, deterrence, according to me, may vary amongst people, would be a very strong issue as far as criminals are concerned. They would feel, okay, this man next door has got arrested. He's got not only arrested, by the way, Grace, you're right. Arresting is the only fear that people seem to have, because trials will take time. So they said, I'm going to get arrested, I'm going to be behind bars. Even for one night, that is enough to deter you to some extent. But the other part, conviction, is quite another story. Mahesh? मैं पिंकी से सहमत हूँ in one respect, that but the real fact of the matter क्या है is that society now, the criminals, as Pinky pointed out, उनकी greed की कोई हद ही नहीं है. They've lost their conscience, they don't care, and they don't mind going to jail under bail situation. जमानत उनको नहीं दी गई, they don't mind that I'll sit in for 3 months, 6 months, 1 year. But if I made that amount of money, and आजकल तो हम करोड़ों की बात कर रहे हैं. I mean, the figures have now gone to 10,000, 15. The scams are of that amount. So people are willing to sit in jail for some time. After all, the trials take such a long time that by the time the trial is ripe for a hearing, the next scam has taken place and they are forgotten. So the only punishment which a criminal of the worst kind, worst economic kind, gets, I mean, murder cases fortunately are fast tracked and you get justice at least at the trial stage. But in these economic offenses, people have, for two reasons, got no deterrence. उनको इसीलिए कोई डर नहीं है. तो दो कारण हैं. One is that after bail, they feel they're over. We spend 6 months to a year to maximum 2 years. Of course, now in the latest scam, people are spending 2.5, 3 years already in all these bank frauds which are taking place. Second is that society is very forgiving of people. इनको शन किया जाना चाहिए. People who rob banks particularly and loot the nation and the economy, they should be socially ostracized. उनको दूर रखना चाहिए. लेकिन our society doesn't do that. So there's two things. The legal system is the only punishment which the legal system gives to a criminal is denial of bail, not a conviction. So record पे नहीं आ जाता. Secondly, once he comes back into society after serving his bail, after being given bail, the criminal is readily accepted. He flaunts his wealth and he gels back into society. People have forgotten his spell. So long as he can, have parties and planes and yachts and all that,
he's fine. So there are two reasons why this has happened. Thank you very much. Gauri, I noticed you haven't spoken, so you are also familiar as much as Ron. What do you think? You're on mute. Yeah. Yeah. So I have to agree with both my seniors at bar here as to their opinion about it. But I personally feel that when crimes are committed, there is definitely no conscience there. But I also feel that they feel they have nothing to lose. You know, sometimes these criminals they're living a better life inside than they're living outside. With petty crimes, especially if I mean that category of criminals. So you know there is a lot of different viewpoints that could contribute to this question of yours. But all in all, I feel like they definitely don't have any conscience when they are committing a crime. There is nothing. It's not what is going to happen after that. It's just, let's just do this and let's see what will happen. And unfortunately, because of our justice system or whatever one may say, there are lacks, there are loopholes, which I really truly believe that in the coming future and for the generations to come, the deterrence is definitely going to be there in a stronger way. Thank you very much. They are page 3 before they commit the crime, and they remain page 3 after they've done that. Over to Rohan. Well put, Samit. I just have a slightly theoretical question, if I may, on a parting note. This is an excellent book that I had the pleasure of reading. And, you know, Mr. Jethmalani, it has a very famous case, one that your father fought, the Nanavati case. And the case talks about social fault lines, which existed in society, and they came to play in the courtroom, the divide between the Sindhi and the Parsi communities in Bombay. How often do you get to see these social fault lines come to play within courtrooms, in your experience, sir? Very often. Very often. I mean, but you know, the Nanavati case, that's only one aspect. The Parsi versus Sindhi thing happened. There's only one little aspect. And ultimately, let me tell you, Nanavati got off because of an exchange. A presidential pardon was given both to a Sindhi criminal, right, who was jailed for fraud, and to Nanavati. So both lawyers for both sides agreed to a pardon so that one Sindhi and one Parsi would get off on a presidential pardon. So there was peace between the communities ultimately in that case. But there's a far more interesting case in Delhi, which I didn't know about in 2009. And that makes a riveting story, and more about it later. In fact, it makes for a better film script than even Nanavati. It was just briefly, it was a army man who had served 3 wars, 1962, 1967, 1971, who killed his wife's lover while he was away. He was a major in the army, and he killed him by sending him a letter bomb. Now that's it. I'm not going to give you more because this is it happened. The case is a reported case in 2009, and my father appeared. He was convicted in the lower court, and my father. It's a more interesting case in Nanavati. It's a crime of passion again, but a more interesting case than Nanavati. And I will send you that judgment if you're. But I'm discussing this with a movie producer in Bombay and giving him the entire case law in that case, and it's a riveting story. And what happened in the appeal court to get this man off? The matter went to the Supreme Court also. The state appealed against him, but he died during the pendency of the appeal. So it's a very, very interesting story. And he was a highly decorated officer, high-ranking officer in the army who fought 3 wars: 62, 65, 71. Thank you so very much for spending this evening with us. They say if I have seen further, it is perhaps by standing upon the shoulders of giants. And I think it's a great learning experience for the thousands of viewers that were watching this book discussion. And thank you very much to Ms. Pinky Anand and Ms. Gauri Govardhan for writing an excellent book which will serve as an anchor and a reflection of the evolution of our collective moral conscience for the years to come. Namaskar.